good morning, everyone. My name is Vikas Khurana. Welcome to RCC show presented by UAP. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस श्रुति, who is a counseling psychologist, who is going to talk on topic which is self care and emotional well-being. So before starting this topic, Shruti, please आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, how you came into this field and कैसा आप तक आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक. So, my experience with being a counseling psychologist and a mental health researcher is really good. I started this journey like 5 years back, where I started with bachelor's in psychology from Delhi University and did my master's in counseling psychology from Tata Institute of Social Sciences. So, my interest was always there in counseling and research work, and that is why I decided to go with this particular profession for myself. And every day when I'm working around in this field or providing sessions and working in the research, it provides me with a sense of satisfaction and happiness for myself as well. So अगर हम start करें तो what exactly is self care and this emotional well-being? Basically, self-care in context of mental health is also refers to like a deliberative or like a proactive approach to maintaining and improving one's emotional and psychological well-being. So self-care, it also involves like a range of activities or practices such as reducing like stress or helping one to understand themselves. So it fosters self-awareness for a person. It also helps in preventing mental health concerns and also supports those who are already dealing with the mental health concerns. Talking about the emotional well-being is like that emotional well-being refers to individuals' ability to recognize, understand, and also manage their own emotions. So like अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी उनके साथ हो रहा है तो वो उस चीज को समझ सके कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो रही है, फिर उनको ये फिर जो उनको इमोशंस है वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से समझ पा रहे हैं, कैसे उसके अंदर किस तरीके से वो उसको वर्कआउट कर सकते हैं. तो दिस इज Right. लाइक इमोशनल केयर और इमोशनल वेलबींग फॉर अ पर्सन. ये एक तरीके से उनकी जो पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, उसको इम्पैक्ट करता है. जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके और उनकी जो एबिलिटी होती है कोप करने की, जो जिंदगी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चैलेंजेस होती हैं, तो Right. उससे डील करने में, उसको समझने में या उसको किस तरीके से बाहर आना है, उस चीज में हेल्प करता है. सो दिस इज व्हाट द सेल्फ केयर एंड इमोशनल वेलबींग इज अबाउट. Okay, so if I would ask कि कुछ ऐसे common signs क्या होते हैं कि that we are neglecting our emotional well-being? सो कॉमन साइंस मतलब इसी तरीके से होते कि अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रेस में है या वो बहुत परेशान है, तो Hmm. ऑब्वियसली वो उनकी जो डेली वर्क है या जो भी उनके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है वो उस पर इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है. सो लेट्स से कि वो इंसान बहुत ज्यादा ऐसे गुस्से में रहता है या उसको काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रेस फील होता है या उसको एनजाइटी भी हो सकती है, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो सकती हैं. तो Hmm. इन सब चीजों से पता चलता है या उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके अंदर भी इम्पैक्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि जब गुस्सा आएगा या अगर वो ठीक से अपनी बातें ही कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी को, तो Correct. उससे उनके रिलेशनशिप के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने खुद के इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहे या उनको एक रिलैक्स्ड माइंडसेट या रेजुविनेट होने का उनकी डेली स्ट्रगल से भी अगर वो ही नहीं मिल रहा है उनको, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो उनकी कंसर्न या स्ट्रेस को क्रिएट करेगा. Right. So जो आपने जैसे कुछ साइंस बताया that they are in constant anger या फिर उनके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे, तो इसमें there is something like कि अगर जैसे सपोज जो उनके साथ लोग रहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो डील करें इसके साथ, बिकॉज पहले उनको वी विल हैव टू मेक देम रियलाइज कि दैट्स यस यू नीड सेल्फ केयर. तो पहले आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे जो उनके साथ रहते हैं आसपास लोग? तो इसमें मतलब क्या होता है कि पहले दूसरों को सजेस्ट करने से पहले आई थिंक कि पहले अगर वो अपने आप को भी समझें तो उससे भी हेल्प मिलती है. अगर हम खुद कम्युनिकेट करेंगे अपनी चीज़ों को कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है या इस वजह से मेरी जो कंसर्न्स है या जो भी चीज़ें मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं, जब हम कि दूसरों को कम्युनिकेट करेंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे ये चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीधे यही बोल देंगे कि मुझे ना बहुत ऐसे गुस्सा आ रहा है या तुम ये सब चीजें करते हो,
तो करेक्ट। सामने वाले इंसान को ये पता नहीं चल रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ना वो अपने इमोशंस बता पा रहे हैं या वो ये नहीं बता पा रहे कि क्या चीज, उनका क्या एक्शन बिहेवियर है जो इम्पैक्ट कर रहा हो सकता है। तो अगर हम ये बताएंगे कि हाँ, अगर आप ये चीज करते हो और इस वजह से मुझे ये चीज फील होती है, सो फॉर एग्जाम्पल आई फील overwhelmed when you say these things to me, and that is how it triggers anger for me. So can you please, try doing something else, or maybe we can talk about it and work around it better. तो सामने वाले इंसान को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हाँ, अगर मैं ये एक्शन करता हूँ या करती हूँ तो उस वजह से इस इंसान के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो एंड अगर वही कि मेरे को, मतलब हम किस तरह, हाँ, तो या कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मेरे को सपोज आई वांट टू वर्क ऑन माय सेल्फ केयर, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज में आई बट मतलब अडॉप्ट क्या कर सकता हूँ मैं, कि सपोज आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माय सेल्फ केयर, कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? सेल्फ केयर में मतलब ऐसे नहीं होता कि आपको बहुत ही ज्यादा हाई थिंग्स करनी है या बहुत ही प्रॉपर इन्वॉल्व भी रहना है। आप बहुत इजी चीजें भी कर सकते हो। आप अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल भी बना सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे सेल्फ केयर में इंडल्ज रहना है। यू कैन डू इट इवन फॉर अ वेरी शॉर्टर टाइम स्पैन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप माइंडफुलनेस में इंडल्ज कर सकते हो, आप एक्सरसाइजिंग कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज है जो आपने कभी नहीं करी है, आप करना चाहते थे बट कभी टाइम नहीं मिला, तो आप वो चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो सेल्फ केयर में। या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक, या अगर किसी को कुकिंग पसंद है, या कोई भी ऐसी चीज है जो उनको मतलब पहले करते थे बट वो अब नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें हम सेल्फ केयर में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आजकल कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो मतलब हम्म। इवन इफ यू हैव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन सेल्फ केयर एंड डेली का जो काम रहता है, तो उसके लिए हाउ वुड यू सजेस्ट कि कैसे करें? बिकॉज इट्स लाइक कि आप इतना, आपका वर्क है, फैमिली है, ऑफिस है, तो कैसे आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? तो बैलेंस हम इस तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं कि जैसे हम हमें पता है कि सुबह से हमें काम करना है या जॉब पे जाना है, या हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो हम एक टाइम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, मे बी इन द इवनिंग, या सुबह टाइम होता है या रात को टाइम होता है। तो हम एक टाइम डेजिग्नेट कर सकते हैं कि हाँ, हम इससे इस टाइम पे अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, या कुछ भी जो चीजें मुझे पसंद है हम वो चीजें कर सकते हैं। So we can decide a day or a time कि this day we will do this, और इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ये चीज करनी है। तो हम इस तरीके से एक प्रॉपर स्केड्यूल उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। वी नो कि कभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है तो वो चीज खत्म हो जाती है उस वक्त पे कि आज नहीं हो पाया या कल नहीं हो पाया। तो हम उसको लेटर ऑन भी कर सकते हैं, या हम सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि मे बी वंस आई कंप्लीट विद दीज पर्टिकुलर थिंग्स, हम उसके बाद ये चीज कर सकते हैं। ये चीज को हम उस वक्त ले सकते हैं बाद में। सो हमें भी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे प्रायोरिटाइज करने में भी मुश्किल होती है डेफिनेटली, बट दिस इज समथिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल, जो उनके लिए ही, उनकी वेलबींग के लिए ही है। तो उस चीज को प्रायोरिटाइज करने में कुछ ऐसे हार्म भी नहीं है। वी कैन सी कि हम किस तरीके से या किस टाइम पे उस चीज को कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली टाइमिंग को प्रायोरिटाइज करना सबके लिए बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है कि वो किस टाइम पे फ्री होते हैं, वो किस टाइम पे कर सकते हैं, बट दे तो कैन ऑल्सो डिसाइड ऑन दी एक्टिविटीज या जो चीजें उनको करनी है। वो पहले से ही सोच सकते हैं कि हाँ, ये मेरा सेल्फ केयर वाली चीज है तो मैं उस वक्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इज इट इम्पोर्टेंट कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करें, चाहे जो भी हमारा टाइम हो, और इज इट लाइक कि हम पूरे दिन में कभी भी करें, दैट कैन ऑल्सो वर्क? कभी भी कर सकते हैं, बट एज यू ऑल्सो शेयर्ड ना कि लाइक समटाइम्स द पर्सन इज वेरी बिजी, और मतलब दे आर ऑल्सो प्री ऑक्यूपाइड विद डिफरेंट थिंग्स, तो कहीं ना कहीं करेक्ट। हम बीच में नहीं कर पाते उसको, और फिर एक वो ओके। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड भी क्रिएट नहीं हो पाता। तो हम उसको एक डेजिग्नेटेड टाइम पे रखें तो इस तरीके से हमें ये भी पता रहेगा कि हमें अपना सारा काम मैनेज करना है उससे पहले या उसके बाद में, बट दिस टाइम इज माई टाइम। हम करेक्ट। उस तरीके से उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन प्रैक्टिसेस जो आप ऑफर करते हैं सपोज अपने क्लाइंट को, इन केस समबडी कम्स कि मैं बहुत ही एंशियस रहता हूँ या मेरा स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ बिकॉज ऑफ हाँ। वर्क वर्क लाइफ, तो देन आप उनको हम्म। क्या सजेस्ट करते हैं?
So what I usually also start with is ki there are different self-care activities that are there, but usually start with medication or mindfulness exercises. So meditation is something that they can also do by themselves, or I help them to do. Ki this is how you can do it. Right. And there are also some guided imagery things that helps them to feel mindful, or to know what is important for them, or how they can make themselves feel relaxed in a situation where they feel anxious or stressed. For some people it also could be like journaling, where they can write about their everyday things, like what were the positive things, what were the negative things that were happening in a day, or something that they want to share with someone. It could also be like engaging in hobbies, or having different creative pursuits that they want to have. Exercising regularly, quality of sleep. So all of seeking support, again therapy or professional help. So this is what I usually share with my clients. And one most important thing that I usually share it with them is that, since they know that what sort of things they always liked and they always want to do, but they never got the time to do it. So in self care, they can definitely prioritize those things, because it will also help them to know that what they wanted to do for a longer time they were not being able to do, but now they are doing it. So again, it helps them to feel happy. It makes them feel relaxed and rejuvenated also. So I always keep these sort of things open to my client, and it is also very subjective, depending upon client to client, that what is going to work out best for them. Right. So usually we both, me and my client, we always try to decide and see which is going to work out best, rather than sharing them with suggestions or anything. But brainstorming different things with each other and knowing what is going to help better. Correct. तो इसमें कई बार क्या होता है, जैसे somebody who is feeling anxious और stressful रहते हैं, तो normally रहता है कि they are like into overthinking. So कभी कभी क्या होता है ना, I have seen people that if they start working on self care, देन उनको इस बात की गिल्ट होने लगती है कि शायद मैं सामने वाले के साथ फेयर नहीं हूँ, जिसको मेरे को जितना टाइम देना चाहिए उतना मैं दे नहीं पा रहा हूँ. तो हाउ वुड यू सजेस्ट Yeah. कि मतलब कैसे डील करना चाहिए कि अगर मेरे को, जैसे अगर मैं सेल्फ केयर के लिए खुद के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए टाइम निकाल रहा हूँ, एंड देन उसी का मुझे गिल्ट हो रहा है दैट आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माय फैमिली. सो ऐसे भी Yeah. केसेस आई एम श्योर आपके पास आते होंगे, तो हाउ डू यू डील विद दैट? So definitely, this is like a very common challenge with self care and mental health, जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत गिल्ट भी होता है कि हम अपनी फैमिली को या किसी भी चीज़ को टाइम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. और सबसे बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन इज ऑल्सो लाइक कि ये बहुत सेल्फिश चीज़ हो जाती है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑलवेज ट्राई टू एम्फोसाइज कि सेल्फ केयर जो है वो सेल्फिश नहीं होता, बट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर ओवरऑल वेलबींग. और इसमें टाइम इन्वेस्ट करना या एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू फील बेटर, हेल्प देम टू मेक देम फील रिलैक्स. इट विल हेल्प देम टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन देयर माइंड, और मेक देम फील रेजुविनेटेड एंड इंक्रीज देयर सेल्फ अवेयरनेस. सो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है ये भी होती है कि अगर हम सबकी हेल्प करेंगे, सबके लिए ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे, तो एक हमारा खुद का स्टेट ऑफ माइंड होता है जो बहुत डिटोरिएट होने लग जाता है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि हमें भी क्या चाहिए, या हम अपने लिए भी एक रिलैक्स सेट ऑफ माइंड प्रोवाइड नहीं कर पाते. तो जब हम अपनी ही इमोशनल वेलबींग या साइकोलॉजिकल वेलबींग ठीक से नहीं रख पाएंगे, देन हाउ विल बी एबल टू केटर टू अदर पीपल एज वेल. सो एक बैलेंस क्रिएट करना उस चीज के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज ना हम खुद की भी हेल्प कर पाएंगे, ना हम दूसरों के लिए भी प्रेजेंट रह पाएंगे. So always maintaining that sort of a balance, and being there for oneself also is very crucial and important. करेक्ट. एंड मोर ओवर आई फील दैट अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे एंड यू विल इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, तो देन आपके जो बाकी रिलेशनशिप हैं देन वो भी अच्छे से जाएंगे उसके अंदर, बिकॉज अदरवाइज वो चाहे आप उनको पूरा टाइम दे भी दोगे एंड यू आर स्ट्रेस, सो वही होगा जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था दैट यू विल बी कॉन्स्टेंटली एंग्री, आप लड़ते रहोगे, रिलेशनशिप तभी आपके काम नहीं करेंगे. तो बेटर है कि लेट देम वर्क ऑन देमसेल्फ एंड देन कम टू यू, सो दैट एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सको. और तो उसी से मेरा एक Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्राइव मतलब होता है उससे कि जो ये रिलेशनशिप एंड सोशल कनेक्शंस होते हैं, हाउ हाउ दे कंट्रीब्यूट टू योर इमोशनल वेलबींग.
जैसे कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस फील कराते हैं। सो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। तो जैसे अगर हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो आपने जैसे अभी शेयर किया कि वो लोग एक रिलेशनशिप को ठीक से भी नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक वो सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस वो लूज करने लग जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली Correct. अगर हमारा ही बिहेवियर इस तरह से रहेगा, तो हम हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी काफी इम्पैक्ट होगा। तो हम Correct. वो चीज़ धीरे-धीरे करके लूज़ करने लग जाते हैं, एंड ऑब्वियसली वो हमारे सोशल कनेक्टेडनेस या सेंस ऑफ कम्युनिटी को इम्पैक्ट करने लग जाता है। Correct. So, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इन जनरल दैट व्हाट आर योर फेवरेट रिचुअल्स, मतलब जो आप सेल्फ केयर रिचुअल, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप एक डेली रूटीन आप फॉलो करते हैं, तो हाउ डू या यू स्टार्ट योर डे? अपने डे के बारे में अगर यू कैन जस्ट टेल आवर व्यूअर्स कि कैसे आप डे स्पेंड करते हैं, हाउ डू मेक श्योर कि आप सेल्फ केयर प्रॉपर्ली चल रहा है, मतलब विच इज हेल्पिंग इन इमोशनल वेलबींग? So usually what I like to do in my self-care is that when I'm going for my work or anything, I usually listen to songs, because obviously I would be traveling. So I listen to songs or watch something out. And then at the office also, I take a proper break for myself where, I'm just being with myself, and, just even if I'm not doing anything, I would like to be there for myself for a while. And when I go back home, I usually walk to my home, or if I'm working from home or I have an off, so I usually make myself know that I have to go for a walk every day. So walking and listening to songs is something that is under my self care. But apart from it, I always like to do different sort of things, right? So for example, reading some papers, or working around for my own mental well-being. So I usually do the mindfulness activities also, or talk to my friends. So these sort of things is what I usually incorporate in my self-care, and this is what has worked out best for me. So I've also definitely tried different activities, but I know this is like a few things that always makes me feel relaxed and soothful. तो आपने एक पॉइंट जैसे बताया दैट यू इंश्योर दैट कि आप डेली वॉक पर जाते हैं, सो हाउ इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी फॉर इमोशनल वेलबींग? Physical activities again, also important for a person, because it helps the person to feel relaxed. Because when we are doing exercising, it has a good impact on the anxiety for a person, or it improves the mood of an individual. Like, it helps them to change their mood or makes them feel calm and relaxed. So this is like what I do is only by myself. So when I'm going, I have different sort of thoughts also running up that helps me to walk around with the things that are there in in my hand. So I try to resolve those. I think in my mind about awareness about my own emotions that I'm going through, and how I can try to manage it. So this is how it helps me to relax myself. करेक्ट। तो आपने किसी इंपॉर्टेंट बात बोली, आप सॉन्ग सुनते हो, तो मतलब Yeah, सॉन्ग्स के लिए तो आई फील इतना स्ट्रांग वो रहता है कि मतलब yeah, इधर वो आपका मूड खराब भी कर सकते हैं। आई हैव सीन दैट yeah, कि अगर इफ यू डोंट चूज द करेक्ट टाइप ऑफ सॉन्ग, आप इमोशनल सेंटी सॉन्ग सुनने लगे, देन अगेन आपका वो जो yeah. सडन ड्रॉप हो जाएगा। तो नॉर्मली हाउ डू यू टेक दैट, मतलब आप सजेस्ट क्या करते हैं, कैसे सॉन्ग सुनने चाहिए मॉर्निंग में? ऑल्दो दिस इज So पर्सनल, I सबका अलग yeah. अलग डिपेंड करता है, Yeah. बट आप क्या सुनते हैं Yeah. नॉर्मली? So I usually, listen to the calm and relaxed music for myself, because, music also plays a very good impact on the person's energy and everything. So let's say in gym, there are like very energetic songs that runs up. So it makes the person have, more sort of, exercising and everything. So if a person wants to feel relaxed, they would like to listen to the relaxed mindset. And sometimes there are different songs with high music and high bass and everything. So it can also trigger different sort of psychological physiological things for a person. So करेक्ट। that is what I usually try to balance myself. Otherwise, I'm a person who always like to feel calm and relaxed. So my music is something that is related to very relaxing and calming. सो आई हैव सीन दैट कि अगर अगर हाई बेस म्यूजिक सुनते हो आप, तो देन यू आर एबल टू लिफ्ट हेवी वेट्स कर सकते हैं। बट Yeah. अगर आप रिलैक्सिंग म्यूजिक के लिए चेक करना चाहें, तो यू ऑल्सो हैव आवर यूवैप म्यूजिक चैनल वेयर वी हैव लाइक गाइडेड मेडिटेशन एंड मेडिटेशन सॉन्ग्स। तो Yeah. मतलब मेडिटेशन म्यूजिक विच यू कैन जस्ट
put it on and relax कर सकते हो. So you can check that also. So उसी से मैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहूँगा that what are some of the resources, books, apps, community which you would suggest to our viewers कि जो regular reference में ला सकते हैं for this self care. So already, there are like very numerous resources and tools that are available to assist individuals in, practicing self-care for mental health, which again includes, like very self-help groups, apps for meditation and mindfulness. And as you also shared that, you also have the soothful and relaxing music on your channel. Then there are very different sort of support groups that are there, taking therapy, or there are very a lot of, online resources such as articles and videos that are there for a person to use these sort of resources to work on self-care or to identify like different activities that they would like to do for themselves. So it could be like outdoor activities or indoor activities and these sort of things which is going to work out the best for them. So they can definitely use such things for themselves. And again, yeah, for self-awareness and also self-care techniques and these things definitely helps. ओके, सो एक जनरली आई जस्ट वांट टू नो, जैसे अगर आप कोई भी हम सजेस्ट करते हैं सेल्फ केयर, मतलब कोई भी एक्टिविटी हम सजेस्ट करते हैं, तो एक नॉर्मली प्रॉब्लम ये रहती है कि हम शॉर्ट टर्म में तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं. जैसे अगर न्यू ईयर Yeah. रेजोल्यूशन अब जनवरी आएगा, देन वी विल टेक सम न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो 2-3 महीने तो अच्छे से चलता है, उसको हम लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते. तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे कर पाते हैं? मतलब नॉर्मली आई एम श्योर कि आपके क्लाइंट्स भी ऐसे होते होंगे जो स्टार्टिंग में आते होंगे Hmm. आपके पास बहुत मोटिवेट हो गए कि हमें ये करना है वो करना है, देन आफ्टर 3 मंथ्स सब फिज आउट हो जाता है. तो उसको आप कैसे हेल्प करते हैं? Yeah, so I always, share with my clients that they can, decide on the activities, the self-care activities that they want to do. And the things are always open for them, like what activity they want to do for themselves. It could be like the same activity for, each week or something, or they can decide for going alternative things that they would like to do, or, trying different things out just to know that what is going to be, helpful for them. So it again also depends upon the client that if it's someone who would like to do the similar sort of things and do not like the changes to be happen. And some people are like very uh, who feels that they want to do different sort of activities. So it we decided together like how they would like to do it or what is going to be beneficial for them. And once they also start doing it, they also start liking it. Ki, yes, this is something that is helping them, or this is something that is really working out for them. So that also helps them to feel motivated to do or take up such activities for themselves. And I have also listened a lot from my clients that this is something that is definitely helping them to work around, and they always make sure to have some time for themselves, because it makes them have that sort of a state of mind there where they are feeling relaxed, or they are stress free, because again it helps them to unwind the different things that are running up in their life. So Correct, once they also see that these sort of things changing for them, they definitely like to incorporate these. correct. So जैसे आपने क्लाइंट्स के बारे में बताया, तो आर देयर सम सक्सेस स्टोरीज व्हिच यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स, that something which has tremendously changed for some clients, if you want to share some stories? Yeah, I mean, definitely they were. I have also seen a lot of clients, but at the same point of time, there is this one thing that I would like to share. But again, keeping the anonymity and confidentiality of the person. So this person was, coming to me where she was feeling very anxious and stressed out. That she was not having a lot of people, surrounded by herself. So they used to feel very overwhelmed and stressed out because of that particular thing, and she did not know that how she would like to make these sort of changes for themselves, or what she can do in a day. So when we started working around onto it, we started with journaling or mindfulness activities that help them to feel calmer and relaxed. And then we started pitching in the different sort of things related to self-care. Like she herself also identified the different self-care things that they would like to incorporate for themselves. And I remember that in the last of the session, they definitely shared it with me that earlier they did not like to spend time alone at all, but now she
craves to spend that sort of time with herself. Because now, since she is taking up different sort of things in self-care, or with the people that she has in her family, so now she always makes sure to have this sort of time for herself and be with herself, because now she started to like it. And that Right. was really good thing that I heard in that particular session. राइट, ग्रेट स्टोरी. एंड प्लस आई थिंक जब आप अपने साथ रहना, खुश रहना सीख जाते हैं ना, देन सारी चीजें ठीक होने स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे. अच्छा, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो उसमें ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट था, उसमें आपकी एक स्टडी थी रिगार्डिंग कैफीन बिवरेजेस. तो वो हाउ डू दीज कैफीन, बिकॉज आजकल इतना वो है कि कैफीन इज लाइक एनर्जी ड्रिंक Yeah. पी रहे हैं बच्चे आजकल, तो कुछ ना कुछ Hmm. चलता ही रहता है. तो इसी कैसे इफेक्ट करती Yeah. हैं? आई एम श्योर कि जब यूथ पीते होंगे तो देन उनका आई थिंक बिहेवियर चेंजेस भी आते होंगे. तो हाउ डू दीज कैफीन बेवरेजेस अफेक्ट मेंटल और मे बी behavioral health of youth? Caffeine, the study that I also did was, dependent upon the young adults and the older adults, as per se. So it also depends upon the quantity of the caffeine that the individual is taking in a day. So let's say that, if somebody is having like 1 or 2 cups in a day, so that is again very fine. But if somebody is having like 5 cups or something, so it again starts to make them, feel very dizzy, or, very overwhelmed. Then again it starts to make the person feel anxious, or it makes them feel irritated or provides them with the angry feelings. And not only caffeine, when I also did the in qualitative interviews, which also shared with me that there were different lifestyle factors and everything that the individuals were incorporating in their day, which was making them to have caffeine. Because let's say if it was a student, so for exams, as per se, they have to take caffeine so that they don't sleep at night and they are being able to study properly, so they are consuming a lot of caffeine in those particular days again. So that is how it started to make them, the person, feel anxious or overwhelmed in such situations or at that particular point of time. So it again depends upon the quantity of how much caffeine we are taking in a day, and keeping it not more than like 1 or 2 cups in a day. सो आई हैव सीन दैट जो नॉर्मली एनर्जी ड्रिंक्स भी होती हैं, वंस यू टेक इट तो सडनली आपको एक हाई मिलता है, देन उसके Yeah, बाद एकदम से ड्रॉप करता है, देन अगेन यू हैव दिस अर्ज कि आप यू कैन टेक इट अगेन, बट दैट साइकिल कंटिन्यूस. वो धीरे धीरे आपका हाई बढ़ता yeah, जाएगा एंड देन फिर आपको yeah. असर भी करना बंद कर देगा, प्लस आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करेगा. Yeah, तो I mean, it also, affects the sleep cycle of a person, because when we are taking caffeine, so obviously, we feel a lot energetic, and at the same point of time, we are doing a lot of work as well. But in the longer run, it starts to affect the sleep of the individual as well, because they are unable to sleep after taking caffeine. करेक्ट. तो राइट, थैंक यू श्रुति जी फॉर हैविंग दिस वंडरफुल सेशन. आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, एंड आई एम श्योर अगर व्यूअर्स would like to contact you, what we will do is कि आपकी contact details हम description में डाल देंगे, so that if somebody wants to get in touch with you, they Yeah, can either contact you directly or through us. जैसे भी वो चाहें वो yeah, contact कर सकते हैं आपको. yeah. So जाते जाते if you can just summarize the session in like 30 to 30, 45 seconds कि how to maintain a good, I mean self care habits, plus which would help in emotional well being. If you can just summarize this session in 30 seconds. So, self-care and emotional well-being is definitely very important for a person. And as I also highlighted in the session, that how much necessity it is for, and at the same point of time, it is not something that should have any sort of guilt to do, or it shouldn't be like feeling selfish to do these particular things, Correct. because again, it is very necessary for a person to maintain their own emotional, psychological, and even the physical well-being of the person. So you can definitely try different activities like mindfulness, or seeing that what sort of activities you want to do by yourself, so you can start doing those things out, or you can see that what are your areas of interest, you can start exploring those things.
you can try to spend some time with yourself even if you not doing anything. So that time also, we are reflecting back of the things that are there in our hand, and then we start reflecting on it, knowing that how to manage it, how to work around onto it, or even what we are feeling on that particular day, or the struggles or the challenges that we are going through. So it definitely helps. And at the same point of time, I'm sure when you will also start doing it, you will also start liking this particular things to be in your day, as I shared with like a success story of my client. So yeah, I mean, you can definitely give it a try and see how it is working out best for you. Right. At least अपने लिए तो time निकाल ही सकते हैं हम सब. Right. So thank you so much, Shruti ji, for this wonderful session. I'm sure viewers ने बहुत कुछ learn किया होगा, and we will stay in touch for further sessions. Sure. I'm sure. Right. Thank you so much. All right. Okay, bye.